Now children, today let's start with chapter number 8, that is the human environment. Right? So what is settlements? Human settlements are those locations where people build their homes. And ये किसमें help करता है? Growth of communities. So what is community? It is a group of people living in a particular area and they are bound with each other with a common interest. And what they help in the development of civilization, जैसे आपका इजिप्ट, मेसोपोटामिया और आपका इंडस वाला हो गया. Depending upon the nature and quality of resources, the human settlement may be temporary, permanent, and from rural, and they may become urban settlement. इनको हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं, जो आपके शॉर्ट टाइम के लिए लोग कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वो टेम्पररी सेटलमेंट होते हैं. ये क्या करते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट. सो वी हैव क्लासिफाइड सेटलमेंट इनटू डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट. टेम्पररी क्या होता है? दोज पीपल हु लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन मूव टू न्यू प्लेस. जैसे हंटर्स हो गए, नोमैड्स हो गए, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो गए. दे नॉर्मली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रैक्टिस? Transhumance, right? And that is seasonal movement of the people in search of new pattern. Why? More and more development, the people build pakka house and वो किसमें grew करते हैं? Permanent settlement में. And then we have permanent settle of two types, rural and your urban settlement. They are distinguished on the basis of site. If we talk about rural settlement, the people related to agriculture, जो villages में रहते हैं, उसको हम rural settlement कहते हैं, right? The people they are engaged in primary activities, right, like agriculture, fishing, animal rearing, and they grow and develop extended period of time. Then we have different patterns like linear pattern, जो आपका single row of house में होता है, roads, railway track. Nuclear में क्या होता है आपका? They are closely built with the market area. Dispersed pattern, जहाँ पे small cluster होता है dwelling के, right? Isolated pattern, they are the settlement which is mostly of individual houses. Now urban settlements क्या होते हैं? So urban settlements are much bigger in size than rural settlement. People जो आपके rural urban areas में रहते हैं, वो किस में engaged होते हैं? Non-agriculture functions, जैसे trade, commerce, administration, and these centers are compact in structures, right? And on the basis of the population, economic activities and administration has been done. So classification of urban administration. Urban settlements को हमने urban administrative towns में divide किया, जिसमें headquarters होते हैं डिपार्टमेंट से लंदन, न्यू दिल्ली, आपका जयपुर, पेरिस, बीजिंग. ठीक है. इसमें जो रेजिडेंस होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स का और डिफरेंट मिनिस्टर्स का, उनके लिए रॉयल प्लेसेस होते हैं. कल्चरल टाउन्स क्या होते हैं? लाइक योर अयोध्या, मक्का, जेरूसलम, एजुकेशनल सेंटर में अलीगढ़, इलाहाबाद एंड शांतिनिकेतन. वही डिफेंस टाउन की बात करें, ये सेंटर ऑफ मिलिट्री एक्टिविस्ट ऑफ्टन हाउस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, समाऊ, बाराकपुर, दिल्ली कैंट, अम्बाला कैंट हो गया. माइनिंग टाउन्स में आपका धनबाद, खेतरी, डिगबॉय और कलोनी. कलेक्शन सेंटर्स में आपका माइनिंग टाउन्स, फिशिंग पोर्ट्स, लंबरिंग सेंटर, दे हैव सम इंडस्ट्रीज दैट आर रिलेटेड टू अबव कलेक्शन एक्टिविटीज. इंडस्ट्रियल टाउन्स में आपके वोकेशंस हो जाते हैं पीपल के, लाइक दुर्गापुर, बकारो और आपका पिट्सबर्ग. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर, जिसमें आपके ट्रेड और कॉमर्स की सर्विसेज आपका जिद्दा हो गया, इंदौर, इंडिया. ठीक है. जिद्दा सऊदी अरेबिया, हांगकॉन्ग, चाइना. नाउ अर्बन रूरल इंडिया. देखो, जैसे रूरल लोग अर्बन एरियाज पे डिपेंडेंट है, ऐसे अर्बन भी रूरल पे डिपेंडेंट, राइट? सो वी कैन से दैट द अर्बन पीपल नीड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द विलेज एंड द रूरल पीपल डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री. देखो, अब जैसे अर्बन लोगों के लिए जो रूरल लोग हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो अर्बन पे डिपेंड होता है. और अर्बन लोग रूरल पे कैसे डिपेंड होते हैं? जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, भाई अगर वो खेती नहीं करेंगे, फार्मिंग नहीं करेंगे, तो आपको व्हीट कहाँ से मिलेगा, राइस कहाँ से मिलेगा, ठीक है, फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे. So rural and urban areas are connected with each other. ठीक है. इनके ट्रेड रिलेशंस भी है, सोशल रिलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिलेशन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट. दैट इज द मीन्स विच बाय पीपल गुड्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहले क्या होता था? लोग एनिमल्स का यूज करते थे टू कैरी गुड्स. विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्वेंशन ऑफ व्हील, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप. अब आप देखते हैं, वी हैव एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स, बसेस, ट्रक्स, डिफरेंट. एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील प्रूव टू बी एन बूम फॉर ह्यूमन. ठीक है. इससे क्या हो गया? जो मूवमेंट हो गई वो इजियर हो गई, कन्वीनियंट हो गई, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गई, राइट? रोडवे, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज कनेक्ट द होल वर्ल्ड एंड नो वन कुड कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस इन जस्ट फ्यू इयर्स. Roadways. A network of road is an integral part of infrastructure required for the development. Now following are the advantages. Roads क्या है? They are easy to construct and maintain.
They can be collected from and sent to doorstep. And roads travel have flexibility. Roads provide link with railway stations. Different types of vehicle can fly on the road. Cycles, rickshaw, bullock carts, scooters, and they can constructed with the relative ease. Say Manali Leh highway है, right? Roads can be metalled, unmetalled. ठीक है, जो मेटल्ड रोड होती है वो पक्का रोड्स होती है, अनमेटल्ड कैसी होती है, कच्चा होती है, राइट? रोड्स विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्टोन, उनको अनमेटल्ड रोड कहते हैं. दे कैन नॉट बी यूज्ड इन रेनी सीजन. इंडिया हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड. आपके पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जैसे आपने देखा होगा ना गोल्डन क्वाड्रेंट जो लेटेस्ट है, ये आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट हाईवेज. एक तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो आपका वैंकूवर सेंट जॉन सिटी में, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर एक्सप्रेसवे. देन वी हैव रेलवे. रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, हैवी गुड्स और लोगों को कैरी करती है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. जब से इन्वेंशन हुआ है स्टीम इंजन का, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट हैव डेवलप्ड वेरी फास्ट. The construction of railway line influenced by the relief feature, climatic condition, density of population. Railway have convenient following benefits. They are convenient for long distance travel. ठीक है, आप long distance travel कर सकते हो. They are quick means of transport on land. Movement of passenger and mail has become easier. Handle more load in comparison to roads. Facilitate करता है carriage of bulky material. Now distribution of railway. Both of these are highly developed industrial region, high level of economic development and urbanization. If we talk about in the USA, wheat and maize, they both are transported by the railway from prairies and the central. If we talk about in southern part of West Europe, trans-mountain railway lines across the prairies, Alps and Caphyllian mountains, they are very important. So in Eastern Europe, railway networks thins out, giving away way to Russian railways. So India has a fourth largest network of railway in the world और largest in Asia. वहीं हम साउथ अमेरिका की बात करें, पंपास ऑफ अर्जेंटीना कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है, ब्राजील के दे हैव बेस्ट नेटवर्क. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इट इज लॉन्ग द ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अफ्रीका, यहाँ पे आपको फ्रेंच, डच और जो जर्मन है उन्होंने इसको डेवलप करा. नाउ वाटरवेज चीपेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल है. ये क्या करता है, बल्कि गुड्स को कैरी करता है. ये फ्यूल एफिशिएंट है, नॉट जस्ट फ्यूल एफिशिएंट, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, राइट, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं फैला. वी हैव डिफरेंट वाटरवे, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट. इनलैंड में आपके रिवर, कैनाल्स, लेक्स, जैसे रिवर नाइल, अमेजन, गंगा, ये नेविगेबल रिवर्स. जो बिजिएस्ट लैंड वाटरवे है वो आपका ग्रेट लेक है, जो आपका यूएस और कनाडा के बीच में. वहीं सी रूट की हम बात करें, वी हैव बिगेस्ट रूट यूके, फार ईस्ट जापान, वन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक रूट जो क्या करता है, वेस्टर्न यूरोप, यूएसए और कनाडा को कनेक्ट करता है. नाउ एयरवेज, इट इज द मोस्ट रिसेंट, फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ वास्ट लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, एयरपोर्ट्स, एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, and rich nation of the world are able to use transport more intensely. Now airways is the only mode of transport to reach the most distant and remote area. आप यहाँ से पेरिशेबल गुड्स को भी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. एंड द स्काई इज लिमिटलेस. ऑल नेशन परमिट फ्लाइट्स थ्रू आउट द फिक्स्ड कॉरिडोर. वी हैव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपके न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली, मुंबई, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, मॉस्को, कराची एंड योर. कम्युनिकेशन, आप क्या कर रहे हो, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो विद डिफरेंट पीपल. ठीक है, आप अपनी मतलब सोशल बीइंग कर रहे हो, एंड he interacts with other to acquire knowledge and ideas. Information between translator information. Ways of communication, we have different ways and there are different modes of sending information. Includes print media, newspaper, magazine, electronic media. So with the launch of satellite, information technology got revolutionized and satellite technology has upgraded the speed information. जैसे न्यूज हो गई, वो आप सुन सकते हो, भाई सुन भी सकते हो, टीवी पे आपके न्यूज चैनल होते हैं, रेडियो पे सुन सकते हो, एंड ओनली एजुकेटेड एंड लिटरेट पीपल कैन रीड. भाई जो एजुकेटेड है, लिटरेट है, वही रीड कर सकते हैं, राइट. एंड वाइल टेलीविजन इज पॉपुलर, द ई वर्ल्ड इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे. ई वर्ल्ड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, मीन्स इंटरनेट वेयर यू कैन अवेल ऑनलाइन सर्विसेज. आप ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, वेरियस थिंग्स आप कर सकते हो, and all these have made life easier. और जो टेक्नोलॉजी है, what it did, it save times and helps to do multiple things. आप multiple things कर सकते हो lesser time, right?
This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.